Hello my dear students, welcome to all in social science class. Dear students, today we are going to discuss question answers of chapter 6 geography in this video lecture. The chapter name is Life on the Earth. So let's get started. First of all, we will discuss part A. Tick the correct option. First question is, which one of the following is a threat to ecological balance? Option A, plantation. B, wildlife protection. C, population growth. And option D, growing crops. So बेटा इकोलॉजिकल बैलेंस को इनमें से किससे खतरा है? डू यू नो बेटा इकोसिस्टम होता क्या है? इकोसिस्टम मीन्स व्हेन there is an interaction between flora, fauna and human beings with their environment. But you know, human beings are very important part of ecosystem, and the population of the world is increasing rapidly. और population बढ़ने से human beings को housing facilities भी चाहिए, तो forest को अंधाधुंध काटा जा रहा है. ह्यूमन बींग्स ने अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी बढ़ाया है, और इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए लैंड चाहिए, तो ट्रीज़ को अंधाधुंध कट किया जा रहा है. इसका रिजल्ट इकोलॉजिकल इम्बैलेंस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन ग्रोथ इज अ थ्रेट टू इकोलॉजिकल बैलेंस. Now move to the next question. What is taiga? Is it a Russian name for evergreen coniferous forest or an animal living in the polar region? Is it a softwood tree or it is a cold desert area? Which one is correct among the following options? Beta, taiga is a softwood tree. Such type of vegetation or trees found in the high latitude as well as high altitudes of Asia, especially in Europe, North America, South America and New Zealand. And here these forests are also known as taiga. Their wood is soft, so it is known as softwood tree. Next question is, for the preservation of varied plant and animal life, the government has set up zoological parks, industrial parks, national parks or adventure parks. Which types of parks set up? The students, different types of plants and animal life को protect करने के लिए इनमें से गवर्नमेंट ने किस टाइप के पार्क सेटअप किए हैं? Government has set up different national parks for the protection of plant and animal life. Now the next question, what are mosses and lichens? The students, mosses and lichens are commonly found vegetation in the polar regions. You can see in this type of vegetation. बेटा पोलर रीजन्स में टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर बहुत कम होता है, लो होता है, मीन्स टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होता है. साइबेरिया के नॉर्दर्न पार्ट और कनाडा के नॉर्दर्न पार्ट इसके मेन एरियाज हैं, और यहाँ पर मोसिस एंड लाइकन्स इस टाइप की वेजिटेशन होती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नॉर्थ अमेरिका के टेम्परेट ग्रासलैंड्स को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एटाकामा, ऑप्शन बी वेल्ड, सी प्रेरीज एंड ऑप्शन डी कैंपोज. Which one is the correct option? Yes, the correct option is prairies. नॉर्थ अमेरिका में ग्रासलैंड को prairies कहते हैं. Let's go ahead to next part, that is part B, filling the blanks. The first one is, the first form of life appeared in the water bodies belonging to flora world. बेटा मिलियन ऑफ ईयर्स तक अर्थ पर लाइफ नहीं थी. इट्स जस्ट अ बैरन प्लैनेट, बंजर थी अर्थ.
ना तो कोई प्लांट्स थे और ना ही कोई एनिमल्स। सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वो वाटर बॉडीज में दिखाई दी एज ए प्लांट्स, प्लांट लाइफ, और प्लांट लाइफ ने लाइफ के दूसरे फॉर्म को रास्ता दिया, दैट इज फोना, मीन्स एनिमल किंगडम। द नेक्स्ट इज द लिविंग जोन ऑफ द प्लैनेट अर्थ इज नोन एज बायोस्फीयर। द स्टूडेंट्स, हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां लाइफ प्रेजेंट है। अर्थ के इस लिविंग जोन यानी जीवित क्षेत्र को बायोस्फीयर कहा जाता है। बायोस्फीयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्लांट्स लाइफ एंड एनिमल लाइफ, यानी प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। नेक्स्ट, द ह्यूमन बींग्स हु फर्स्ट अपीयर्ड ऑन द अर्थ वर नोन एज होमो सेपियंस। डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन बींग्स जो सबसे पहले अर्थ पर अपीयर हुए या दिखाई दिए उन्हें होमो सेपियंस कहा गया। नेक्स्ट फिलअप इज द टाइगा वेजिटेशन इज ऑल्सो नोन एज coniferous forest. The students, earlier I told you temperate softwood trees, especially different continents like Europe, North America, South America और न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। इन फॉरेस्ट को वहाँ टैगा भी कहा जाता है। इन फॉरेस्ट में ये ट्रीज कोनिकल शेप में होते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर लाइक ए कोन, जैसे सॉफ्टी की शेप होती है ना, कोन की तरह, और इन ट्रीज की जो वुड है वो भी सॉफ्ट होती है। कोनिकल शेप की वजह से इन फॉरेस्ट को कॉन्फीरियस फॉरेस्ट भी कहा जाता है। फिफ्थ पिलर, दैट इज द प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड आर नोन एज फूड फैक्ट्रीज ऑफ द बायोस्फीयर। डियर स्टूडेंट्स, plants prepare their own food with the help of non-living things like sun, air and water. That's why इनको फूड फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। और इस अर्थ पर प्लांट्स एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करते हैं और एनिमल्स सोयल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, सी whether the given statement is true or false. The first statement is, in the grasslands the number of animals is less as compared to those in the equatorial forest. Is it true or false? This statement is true because around the equatorial region the temperature and rainfall is very high throughout the year. So trees are tall and dense there. यानी ट्रीज इक्वेटोरियल रीजन में लंबे और घने होते हैं। बेटा, हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल इस टाइप की जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं वो प्लांट्स और एनिमल लाइफ की ग्रोथ के में हेल्पफुल होती हैं। ऑन द अदर हैंड, इन द डेजर्ट एरियाज टेम्परेचर इज हाई एंड रेनफॉल इज लेस। तो इस टाइप की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो प्लांट्स और एनिमल लाइफ के लिए सुटेबल नहीं होती। So you can see this statement is true. Next statement is, afforestation causes rise in the pollution level in the atmosphere. This statement is false. You know, afforestation means planting more and more trees. प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है और इससे पॉल्यूशन लेवल कम होता है। So this statement is false. Third statement, tigers and lions are the endangered species in India. This statement is true. In wildlife community, few species of animals are in danger of extinction. जैसे टाइगर्स, लॉयंस जो खत्म होने की कगार पर हैं। Fourth statement, pampas are the temperate grassland in Australia. Is this statement true or false? This statement is false. Beta, temperate grasslands are known by different names in different regions. For example, prairies in North America, we already discussed today's lecture. Pampas in North America.
downs in Australia and velds in South America. So you see here in North America, temperate grassland are called pampas, and in this statement, pampas are the grassland in Australia. So this statement is false. Next, insect-eating animals are most commonly found in the dense forest of the equatorial region. It is true. As I already told you, इक्वेटोरियल रीजन में हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल होती है. सो यहाँ पर वैरायटी ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं लाइक मंकीज, एलिफेंट्स, क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, आर्माडिलोज, जो इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़ों को भी खाते हैं. लेट्स डिस्कस द पार्ट डी. क्वेश्चन नंबर 1. नेम द मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन of the world. The students, the vegetation belts in the world can be divided into different groups on the basis of their location and climatic conditions, and these are tropical hardwood forests, grasslands, deserts and temperate softwood forest. Move to the next question, that is, name some common plants found in cold and hot desert regions of the world. Beta, common plants or main vegetation that is found in hot deserts are cactus, shrubs and bushes. यानी कांटेदार पौधे और झाड़ियाँ hot desert की common vegetation है. And the common plants of cold deserts are mosses and lichens. Next question. What are the major components of ecosystem? Dear students, an ecosystem can be categorized into two parts, biotic and abiotic. Abiotic constituents includes minerals, climate, soil, water, sunlight and all other non-living elements. And its biotic constituents consist all of its living members like plants, animals and human beings. So two main components of ecosystem are biotic and abiotic. Question number 4. Give some example of trees having needle shaped leaves. The students, trees of temperate softwood forest are conical in shape and the leaves of these trees are like needle. यानी इन ट्रीज की जो लीव्स हैं वो सुई के आकार की में होती हैं. एग्जाम्पल ऑफ दीज ट्रीज आर पाइन, फर, स्प्रूस एंड लार्च. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. Why do animals in polar region have thick fur on their bodies? The students, if we talk about the polar region, then here almost the area is covered with thick snow. So in such areas only those animals survive which have thick fur on their bodies. So बेटा इन एरियाज में स्नो इतनी पड़ती है यानी एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से सिर्फ वो ही एनिमल्स वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं जिनकी बॉडी पर फर होती है. कॉमन एनिमल्स इन पोलर रीजन्स आर पेंगुइन, पोलर बियर, यॉक एंड फॉक्स. लेट्स गो अहेड टू पार्ट ई. फर्स्ट क्वेश्चन, why are equatorial forests known as evergreen forests? Give a few examples of trees found there. Answer is, equatorial forests are known as evergreen forests because these forests remain green throughout the year. Near equator, due to favorable climate, that is high temperature and heavy rainfall, these forests remain green. The trees are very tall and thick. You can see in this picture, very tall trees. So these forests are known as evergreen forest. बेटा इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये फॉरेस्ट पूरा साल हरे भरे रहते हैं, ग्रीन रहते हैं. इक्वेटर के पास क्लाइमेटिक कंडीशन बेटर होती हैं. फॉर एग्जाम्पल हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल की वजह से यहाँ ट्रीज लंबे और घने होते हैं. सम एग्जाम्पल ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट आर इबोनी, रबर, मोहोगनी एंड
rosewood. Next question, that is, what role do plants play in ecological balance? Beta, plants play an important role in the ecological balance as plants provide food for the animals as well as human beings to satisfy their basic needs. बेटा प्लांट एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उन्हें फूड प्रोवाइड करते हैं. प्लांट से हमें फूड मिलता है. सेकेंड पॉइंट, प्लांट्स रेनफॉल लाने में भी हेल्पफुल होते हैं. एंड थर्ड पॉइंट इज, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. प्लांट्स की वजह से हमें सांस लेना इजी हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, plants are also known as food factories. You know, my dear students, non-living things like sun, air, water की help से plants अपना food prepare करते हैं. Hence, they are known as food factories. Plants animals को food provide करते हैं और animals soil nutrients provide करते हैं जो कि plants की growth के लिए helpful होते हैं. So, in this way, plants play an important role in the ecological balance. The third question of part E, that is, distinguish between tropical and temperate grasslands. First difference, that is location. Beta, tropical grasslands are located between the equatorial forest and hot desert in both the hemispheres. Tropical grasslands equatorial forest और hot desert के बीच located हैं. एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स टेम्परेट जोन और कॉन्टिनेंट के इंटीरियर पार्ट्स में लोकेटेड है. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रिसीव अबाउट 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स रिसीव अबाउट 25 to 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में लगभग 100 सेंटीमीटर और टेम्परेट ग्रासलैंड में लगभग 25 to 75 सेंटीमीटर के बीच रेनफॉल होती है. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में ग्रास यानी घास थिक यानी मोटी, रफ यानी खुरदरी और टॉल यानी लंबी होती है. वेयर एज द ग्रासेस आर शॉर्ट एंड सॉफ्ट इन टेम्परेट ग्रासलैंड, यानी टेम्परेट ग्रासलैंड में घास छोटी छोटी और मुलायम होती है. एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर कैंपोज इन ब्राज़ील एंड एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका एंड पम्पास इन South America. Now question number 4, that is, differentiate between hot and cold deserts. Dear students, hot deserts are mostly located on the western margin of the continent where temperature remain very high throughout the year, and cold deserts are mostly found around the polar regions where temperature remain very low throughout the year. बेटा हॉट डेजर्ट्स मोस्टली कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन पर होते हैं जहाँ टेम्परेचर पूरा साल क्या रहता है, हाई रहता है, जबकि कोल्ड डेजर्ट मोस्टली पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं जहाँ टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर लो रहता है यानी कम रहता है. एग्जाम्पल ऑफ हॉट डेजर्ट्स आर सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका एंड थार डेजर्ट इन इंडिया, while as example of cold deserts are Siberia in Russia and the northern part of Canada. Common vegetation of hot desert are cactus plants, shrubs and bushes, यानी कांटेदार पौधे और झाड़ियाँ hot deserts के एग्जाम्पल हैं, जबकि mosses यानी काई और lichens are the common vegetation found in cold deserts. Let's come to the last question of question number 5, that is part E of part E. So what are the various problems related to the ecological imbalance and what steps should we take to solve them? My dear students, problems that are related to ecological imbalance are, first one is the forests are decreasing rapidly, यानी forest बहुत तेजी से कम होते जा रहे हैं. ह्यूमन बींग्स अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए फॉरेस्ट की रेकलेस कटिंग कर रहे हैं, अंधाधुंध फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं. ड्यू टू दिस सम वाइल्ड एनिमल्स आर इन द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शंस. यू नो बेटा, फॉरेस्ट आर द हैबिटेड प्लेस
ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। हमारे यहाँ लॉयंस और टाइगर्स जैसे एनिमल्स खत्म होने के कगार पर हैं। थर्ड प्रॉब्लम दैट इज द पोल्यूशन लेवल हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पूरे वर्ल्ड में पोल्यूशन का लेवल भी काफ़ी बढ़ रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन पैदा हो गई है। ड्यू टू दिस ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग इन पोलर रीजन्स विच कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर द कोस्टल एरियाज। सो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए? We should plant more and more trees, means afforestation. I mean to say each one plant one, okay? Second, hunting of animals should be banned and more wildlife sanctuaries, national parks and bioreserves should be set up. यानी जानवरों के शिकार पर सख्ती से रोक लगानी चाहिए। एनिमल स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स भी सेटअप किए जाने चाहिए। इवन कई नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आई हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6. आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव गोट द चैप्टर वेरी वेल. Revise it properly. Thank you. Stay blessed and stay happy. Bye bye.